श्री प्रद्युत बारदोलोई जी। धन्यवाद महोदया। जैसे माननीय मंत्री जी ने कहा कि दिस बिल seeks to amend the part 15 of the schedule to 1950 order, which specifies the Sidal tribes in the state of Tripura. Tripura has 19 very distinct, recognized ethnic tribal groups. And among these 19 distinct ethnic tribal groups, there are also 9 distinct tribal languages used by these tribal people. The bill seeks to recognize the Darlong community as a sub-tribe of the Greater Kuki tribe in the list of the STs in the state of Tripura. Now, it is heartening to know that this particular tribal group, the Darlong community, is comparatively more advanced in Tripura because the literacy rate, the education rate in comparison is high among the Darling community. And there is no question of not supporting this move of the government. Let me tell you one thing. But, sir, what is intriguing about this sudden move of the government to bring this bill and having it passed in the parliament is this, because Tripura is going to elections very soon. And it is known that the ruling party here, the government, is a past master of game of giving out election-oriented different measures. Nothing harm in it, but actually that is what is intriguing, because government is probably hoping to reap political benefits by singling out Tripura just before the elections that are going to take place in a couple of months. Why I am telling you this, that ये बिल तो अच्छा बात है, ये ट्राइबल स्टेटस देने में हम लोगों का सपोर्ट तो होगा, लेकिन जो खुखलापन है ये मूव में, मैं यही बताना चाहूंगा कि देखिए करंट जो बिल, ये जो बिल मंत्री जी ने पेश किया है, current bill has not estimated expenditure for the welfare of the proposed inclusion of tribe or accounted for the budget outlay. Decreasing accountability. More recognition is not sufficient. Only recognition is not sufficient. Need to commit funds and concrete policies. Why I am telling you this? The financial memorandum of the bill says it is not possible to estimate the likely additional expenditure to be incurred on this account at this stage. However, the expenditure, if any, shall be accommodated within the approved budgetary outlay of the government. जो existing पैसा है, जो प्रावधान है, उसी में से ये tribal community का ऊपर खर्चा किया जाएगा. I just wanted to point out, महोदया, कि according to the Niti Ayog's allocation for the welfare of Sidal tribe guidelines, जिसको AWST बोलते हैं, वहां नीति आयोग ने ये मैंडेटरी बोला है कि it is mandatory to allocate an amount that is proportionate to tribal population. बहुत दुख का बात है कि the allocation in the financial year 2022-23 was not proportionate at all. And the Sidalkas and Sidal tribe budgets actually have a shortfall of rupees 40,634 crore and rupees 9,399 crore respectively. ये बहुत दुख का बात है. आप लोग ट्राइबल स्टेटस दे रहे हो, लेकिन ट्राइबल का बेनिफिट्स के लिए, डेवलपमेंट के लिए जो प्रावधान करना चाहिए, वो तो आप लोग नहीं कर रहे हो. The budget for schemes aimed at creating jobs for Sidal tribes in the union budget of 2022-23 has been substantially decreased. ये ज्यादा कम हो गया है. From rupees 89.5 crore last year
to rupees 11.3 crore this year. Is it not very grave matter? It's actually Khokhlaphan. Or the current year labor welfare scheme for STs saw a decrease from the previous year's 12.9 crore to 10.66 crore this year. The budget for STs have also lacked significant funding in areas like education and women's safety. तो यही बात मैं दोहराना चाहूंगा कि सिर्फ रिकॉग्निशन देने से नहीं होगा, उसका पीछे आप लोगों का सिंसियरिटी भी आपको दिखाना होगा कि ट्राइबल को इलेक्शन से पहले आप रिकॉग्निशन दे दो, सिडलिंग दे दो, लेकिन काम करने के लिए वो ट्राइबल कम्युनिटी को बेनिफिट ऊपर लाने के लिए, अपलिफ्ट के लिए आप लोग क्या कदम उठा रहे हो, ये तो बिल्कुल कहीं भी लिखा नहीं है या दिखा नहीं जा रहा है। मैं यही बात बताना चाहूंगा that the union government must do more than recognition of the Sil tribes and work in the direction of their well-being and development. Article सिर्फ tokenism से नहीं चलता. Article 46 of the Constitution provides that the state shall promote with special care of the education and economic interests of the weaker sections of the society, and in particular, the scheduled castes and scheduled tribes, and shall protect them from social injustice and all forms of exploitation. Mahodaya, government ne Bajborua committee about the northeast tribal jo hamare population hai. In the context of northeast, the need to meaningfully implement the Bajborua committee report for safety and security of the northeast tribal communities, which was given. This Bajborua committee was formed by the government of India, by the government here in Delhi. Bajborua committee submitted report, but this government never showed any sincerity in the implementation of the Bajborua committee report. Similarly, I just want to point out, Mahodaya, that Standing Committee on Social Justice and Empowerment has found that the National Commission for Scheduled Tribes has been dysfunctional for the last 4 years. Don't you think it's shameful? कि National Commission for Scheduled Tribes, जो Standing Committee ने report में कहा है कि ये National Commission for Scheduled Tribes has been dysfunctional for the last 4 years and has not delivered a single report to the Parliament. What do you have to say, माननीय मंत्री जी? क्योंकि ये जो नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, उन्होंने कोई रिपोर्ट भी सबमिट नहीं किया है और पूरा फंक्शन भी नहीं कर रहा है, तो आप लोगों का जो सिंसियरिटी है हमारे ट्राइबल्स के बारे में, ये कि सही है, ये सही दिखाई दे रहे हैं. Standing Committee found that these reports, though finalized by the Commission, are withheld by the Union Ministry of Tribal Affairs. I'm very sorry to say, Honorable Minister, that your ministry has withheld this report. That is what the Commission has said, Standing Committee has said, कि आपने उसको permission भी नहीं दिया शायद. जो भी हो, I think there is some explanation to be made by your ministry on this. Need to expedite working and presentation of reports, address the commissions of manpower and budget shortages so that it can actively work towards the welfare of the scheduled tribe communities. दूसरा बात है कि ऐसा जो revisions, structural revisions, categorical revisions जो आप कर रहे हो, इसमें data on caste is very important. We all know that no census, caste census has taken place ever since 1931. अगर कास्ट सेंसस नहीं होगा, अगर डेटा नहीं रहेगा कि कौन सी ट्राइबल एथनिक कम्युनिटी का पॉपुलेशन कितना है, उसका रिवीजन, स्ट्रक्चरल रिवीजन कैसे किया जाता है कि एसटी में आएगा, एससी में आएगा, तो दिस डेटा इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड डेटा ऑन कास्ट इज इंपेरेटिव फॉर एनेबलिंग रीजनेबल conversations on categorical revisions within the scheduled caste, scheduled tribe and other backward class categories, and the legitimacy of the economically weaker section category, targeted development programs for the marginalized, and so on. It is very, very important, किंतु गवर्नमेंट ने कोई सिंसियरिटी दिखाया नहीं है. मैडम, मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि there are many ethnic groups
in our state, in our country. And these ethnic groups have to be recognized, क्योंकि ये जो ethnic tribal communities है, ये हमारा देश का धरोहर है, और इनको ना सिर्फ रिजर्वेशन, उनको कंजर्व करना है, प्रोटेक्टेड करना है, उनको डेवलप करने के लिए काम करना है। अभी ये जो ट्राइबल एथनिसिटी के बारे में जो मैं दो शब्द बोलना चाहूंगा मैडम, कि देखिए द ट्राइबल पॉपुलेशन इन आवर कंट्री, वी ऑल नो दैट, हैज एंड्योर्ड historic and systematic discrimination over the ages. According to the Tribal Health Report of 2018, madam, 55% of our country's tribal population now resides outside their traditional habitats. वो पहले जो रहते थे उनसे उनको भगा दिया जाता है, तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि और एक मिनट मैडम मैं बोलना चाहूंगा। The report cites the census of 2011 that found 32% decline in their villages where पहले 100% tribal population था, और जो illiteracy का rate है, tribal health report बताया है 41% of the tribal population is illiterate in comparison to 31% of the non-tribal population. मैडम, ये इसके बारे में मैं और एक बात बताना चाहूंगा कि हमारा असम क्षेत्र में 6 कम्युनिटीज है। हमारा ये 6 कम्युनिटीज है, तायाहुम, कोच राजवंशीज, सुटिया, मोरान, मटक्स एंड टी ट्राइब्स। ये 6 कम्युनिटीज को लगातार बीजेपी सरकार ने उनको आश्वासन दे रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा कि बीजेपी पार्टी, रूलिंग पार्टी, that's why I'm mentioning BJP, the ruling party, in the run up to the 2014 का जो इलेक्शन हुआ था, लोकसभा इलेक्शन, उसी समय आप लोगों का बड़ा बड़ा नेतागण असम में जाकर उस कम्युनिटीज को आश्वासन दिया गया था कि आप लोगों को शिड्यूलिंग हम करेंगे। फिर 2016 में असम का जो असेंबली इलेक्शंस का पहले फिर ये पार्टी का टॉप लीडर्स जाकर इस कम्युनिटी लीडर्स के साथ मीटिंग करके उन लोगों को आश्वासन दिया गया था कि आप लोगों का क्या जाएगा, शिड्यूलिंग क्या जाएगा। सिर्फ यही नहीं, जो विजन डॉक्यूमेंट दिया गया था 2016 में मैडम बीजेपी का, वहां में भी प्रॉमिस किया था कि 6 कम्युनिटीज को दिया जाएगा शिड्यूलिंग। और असम का जो बीजेपी सरकार है, ये बीजेपी सरकार ने रिपोर्ट देने के लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स फॉर्म किया था 2019-14 जनवरी। अभी तक वो रिपोर्ट आपका हिसाब ने, आपका उत्तर में देखा गया कि अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं दिया। तो ये जो इनसिंसियरिटी है, 9 साल बीत गया 2014 से, लेकिन अभी भी आपने ये 6 ट्राइबल कम्युनिटीज जो अपना कैरेक्टरिस्टिक्स है, ट्रेट्स है, जो अपना उन लोगों का बहुत, हमारे असम का इंडिजिनियस कम्युनिटीज है, ट्राइबल ट्रेड्स है, उन लोगों का प्रोटेक्शन देने के लिए, उन लोगों का डेवलपमेंट करने के लिए आप लोगों का गवर्नमेंट कुछ नहीं किया है। इसीलिए मैं बोलना चाहूंगा मैडम, जस्टिस शुड बी गिवन टू दिस कम्युनिटीज इंक्लूडिंग द 6 कम्युनिटीज ऑफ असम। थैंक यू। ऑनरेबल